Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So, today we are going to study atomic mass, molecular mass and formula mass. Okay, so starting from atomic mass. Now, atomic mass or mass of an atom is actually very small because atoms and molecules are very small. Nowadays, sophisticated techniques such as mass spectrometer is known. With the help of mass spectrometer, we can examine atomic mass of different elements. But in 19th century, scientists considered an isotope of carbon known as represented by 12C as a standard for measuring atomic mass. Okay, so atomic mass or one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. So कार्बन का उन्होंने एक आइसोटोप लिया जिसका 1/12 मास ऑफ अ कार्बन is exactly equal to one atomic mass unit, and one atomic mass unit is represented by numbers equals to 1.66025 into 10 to power minus 24 gram. This is the mass of one isotope of carbon represented by 12C. Okay, so mass of an hydrogen atom is 1.6735 into 10 to power 24 gram. So in terms of atomic mass unit, this is also the mass of hydrogen in terms of atomic mass unit. We can represent atomic mass unit of hydrogen in terms of atomic mass unit in terms of AMU as follows. Okay, so we can divide this atomic mass unit by the mass of hydrogen atom and we get 1.0078 atomic mass unit for hydrogen atom. Okay. Moving on, molecular mass. So molecular mass is the sum of atomic mass of elements present in a molecule. सिंपली आपके मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मास का जो सम होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है. ओके, वन मोर थिंग आई विल टेल यू दैट जो आपका पीरियोडिक टेबल में मासेस गिवन होते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होते हैं बिकॉज जो एलिमेंट्स हैं वो आपके वन और मोर आइसोटोप के रूप में एग्जिस्ट करते हैं. दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोटोप. तो उनके मोर देन वन आइसोटोप होते हैं. दैट्स व्हाई जो उनका मासेस होता है, एटॉमिक मास होता है, वो एवरेज लिया जाता है. सो इन पीरियोडिक टेबल एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन. ओके, नाउ मूविंग ऑन मॉलिक्यूलर मास. Then we can take an example of CH4 methane molecule. So how can we calculate molecular mass of methane? This is atomic mass of carbon plus 4 molecule of hydrogen into atomic mass of hydrogen. So जितने भी आपके एटम्स गिवन होंगे चाहे वो एक हो, दो हो, सो ऑन हो, तो उससे हम क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे. हियर वी हैव 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो वी मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बाय 4 एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. देन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12.011 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 4 into atomic mass of hydrogen is 1.008 atomic mass unit. So we get 16.043 atomic mass unit simply represented by U as molecular mass for methane. And हम इसी तरीके से जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. चाहे वो आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O हो, चाहे वो ग्लूकोज का C6H12O6 मॉलिक्यूल हो, तो हम उनके मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ मॉलिक्यूल. ऑन फॉर्मूला मास, some substances such as sodium chloride
do not contain discrete molecules as their constituent units. In such compounds, sodium positively charged and chlorine negatively charged entities are arranged in three-dimensional structure, and in three-dimensional structure, sodium ion is surrounded by 6 negative chlorine ion, and also vice versa, one chlorine ion is surrounded by positively charged 6 positively charged sodium ions. Okay, in such cases the formula NaCl for sodium chloride is used to calculate formula mass rather than molecular masses. Okay, so formula mass for sodium chloride is atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. From periodic table, atomic mass of sodium is 23 and atomic mass of chlorine is 35.5 atomic mass unit. So we have 58.5 atomic mass unit formula mass for sodium chloride. Okay, so today we studied about atomic mass, molecular mass and formula mass. That's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.